हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्मार्ट फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आपको साइंस में 8th क्लास के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट, फोकस दिस। हम करेंगे आपको चैप्टर फर्स्ट। स्टूडेंट ध्यान दिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना चैनल बनाएं, वीडियो शेयर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो से ऐसे जुड़े रहें। स्टूडेंट फोकस दिस, करेंगे आपको चैप्टर फर्स्ट के कुछ आंसर। चैप्टर फर्स्ट का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, फोकस दिस, ध्यान दिए। स्टूडेंट देखिए, कराते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराते हैं आपको। डिफाइन एग्रीकल्चर लिस्ट बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन करेक्ट ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका आंसर, आगे देखिए इसका आंसर। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड rearing animals on a large scale for food, fiber and other useful products is known as agriculture. Some basic agricultural practices are, पहला पॉइंट देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा पॉइंट देखिए सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। तीसरा पॉइंट देखिए एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। चौथा पॉइंट देखिए इरिगेशन। पांचवा पॉइंट देखिए प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट। छठा पॉइंट देखिए हार्वेस्टिंग, थ्रेस्टिंग एंड ब्रोइंग। आठवां पॉइंट देखिए स्टोरेज। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू। देखिए क्वेश्चन नंबर टू, डिफरेंशिएट बिटवीन खारिफ एंड रबी क्रॉप्स विद एग्जाम्पल। देखिए डिफरेंट बिटवीन, देखिए पहले देखिए खरीफ क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून सीजन एज दे रिक्वायर मोर वाटर फॉर ग्रोथ, फॉर एग्जाम्पल पैडी, कॉटन, सोयाबीन एक्स्ट्रा। ओके, ये हो गया बच्चों खरीफ क्रॉप्स। अब देखिए करवाएंगे रबी क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन बिटवीन अक्टूबर अप्रैल as they require less water, for example wheat, gram, barley extra। ओके स्टूडेंट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए स्टूडेंट्स, वाई इज द सॉइल suitably traveled before sowing seeds। आंसर देखिए, द plugged soil often has crumbs of soil that need to be broken or crushed. The soil needs to be suitably leveled before sowing seeds। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री। अब क्वेश्चन नंबर फोर देखिए स्टूडेंट्स, इन व्हाट वे इज द यूज ऑफ अ सीड ड्रिल एडवांटेजेस ओवर ब्रॉडकास्टिंग। आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर देखिए, आ सीड ड्रिल इज एडवांटेजेस ओवर ब्रॉडकास्टिंग बाय फॉर प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ सीड्स। दिस मेथड आल्सो प्रिवेंट्स द डैमेज caused by birds and saves times and लेबर। ओके फ्रेंड, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, व्हाट आर वीड्स। व्हाट आर वीड्स? वीड्स क्या है? वाई शुड वीड्स बी रिमूव्ड फ्रॉम अ फील्ड। आंसर देखिए इसका, अनडिजिटेबल प्लांट्स आर वीड्स। वीड्स कैन adversely affect plant growth as they compete with the crop plants for nutrients, space, water and sunlight, hence weeds needs। आगे देखिए स्टूडेंट्स, needs to be removed from the field। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए स्टूडेंट्स, why is the prolonged use of DDT not
डिजरेबल। आंसर देखिए, insecticides may affect wildlife in the area they are sprayed, and continuous usage of pesticides can lead to ability of resistance among pests. Okay students, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, डिफाइन द फॉलोइंग। ए पॉइंट देखिए, अपियरी, डेफिनेशन देखिए अपियरी की, अ प्लेस वेयर बीज आर कीप्ड इज कॉल्ड अपियरी। दूसरी डेफिनेशन देखिए, डेयरी एनिमल्स, एनिमल्स दैट प्रोवाइड अस मिल्क आर कॉल्ड डेयरी एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए तीसरी डेफिनेशन, प्लांट ब्रीडिंग, द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक principles to produce plants that are more useful to humans is called plant breeding. ओके स्टूडेंट्स, ये करवा दिया हमने क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, अब गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ। ए पहले देखिए, वीडिसाइड्स, वीडिसाइड का क्या होगा, MCPA and 2,4-8। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा देखिए, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का आंसर क्या होगा, BHC and DDT। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गए क्वेश्चन 8 करवा दिए। अब आगे ध्यान दिए, दूसरे पार्ट के आते हैं क्वेश्चन आंसर, आगे ध्यान दिए स्टूडेंट्स। अब कराएंगे दूसरे पॉइंट H के आंसर दी फॉलोइंग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ वुड यू प्रिपेयर अ फील्ड बिफोर सोइंग सीड्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। आंसर देखिए, सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल प्रिपरेशन में पार्ट देखिए, सॉइल प्रिपरेशन के जो पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, प्लगिंग और लेवलिंग। आंसर देखिए, plants grow and derive water and nutrients from the soil. It is largely the soil on which growth of plants depends. Therefore, preparation of soil before cultivating and kind of crop is very important. The preparation of soil is done by 2 main techniques, plugging and leveling। पहले देखिए पॉइंट प्लगिंग देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल यूजिंग अ टूल और एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड द प्लग। ओके स्टूडेंट्स, आगे ध्यान दिए, देखिए अब देखिए दूसरा पॉइंट, लेवलिंग, द प्लग सॉइल ऑफ्टन हैज़ crumbs of soil that need to be crushed or crushed. The soil needs to be suitably leveled before sowing seeds. Section of seed and sowing of seed देखिए, आगे देखिए, farmers have to be very careful about the seeds they sow. The seeds they select should be of good quality, that is they should be healthy, disease free and clean। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लॉन्ग आंसर्स का, कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द क्रॉप फील्ड। आंसर देखिए, पहला बता दें आपको, मैन्योर, पहला पॉइंट देखिए मैन्योर में, इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स बट नॉट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। दूसरा पॉइंट देखिए, नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, दस एब्जॉर्ब बाय प्लांट स्लोली। तीसरा पॉइंट देखिए, क्वाइट बल्की एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। ओके स्टूडेंट, ये हो गया मैन्योर। अब देखिए फर्टिलाइजर,
पहला पॉइंट देखिए फर्टिलाइजर में, इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सच एस NPK। दूसरा पॉइंट देखिए, डिजॉल्व इन वाटर दस कैन बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स क्विकली अस बल्कि एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल देखिए, यूरिया एमोनियम सल्फेट। ओके स्टूडेंट्स, आगे ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल देखिए मैनुअर की इधर, compost in the manure obtained by decomposition of dead plants and animals। और न्यूट्रिएंट देखिए पोटेश। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स दैट कैन बी एम्प्लॉयड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ वीड्स इन अ क्रॉप फील्ड। आंसर देखिए, undesirable plants are called weeds. Weeding can be done by these methods। पहला पॉइंट देखिए, मैनुअली बाई हैंड, यूजिंग अ ट्रॉवेल, खुरपा, आरा, नैरो, अ लार्ज कॉम्ब लाइक टूल। दूसरा पॉइंट देखिए, केमिकली, बाई certain chemicals called vertically verticals। एग्जाम्पल 2,4-D MCPA एक्स्ट्रा। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट देखिए, नेचुरली, प्लांट्स रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द सॉइल विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वीड्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, वाई इज प्लगिंग एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर फील्ड्स। आंसर देखिए, प्लगिंग द फील्ड हैज सेवरल एडवांटेज। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एडवांटेज सम ऑफ देम आर। पहला पॉइंट देखिए, इट अलाउज द रूट्स टू पेन सॉइल। दूसरा पॉइंट देखिए, इट प्रोवाइड्स एरेशन टू द सॉइल, दिस हेल्प्स the cells of roots to get sufficient amounts of oxygen to carry out respiration। दूसरा पॉइंट देखिए, it ensures proper drainage of water, the deeper the soil is dredged the better is the drainage। तीसरा पॉइंट देखिए, it helps in proper mining of fertilizers as well as organic matter with loosened soil। फिफ्थ पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, लूज सॉइल supports the growth of earthworms and improves decomposition brought about by microbes। This enhances the fertility of soil and help in recycling of nutrients। लास्ट पॉइंट देखिए, it also helps to uproot weeds। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, डिस्कस सम नेचुरल मेथड्स टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पेस्ट्स। इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए स्टूडेंट्स, सम नेचुरल मेथड्स टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पेस्ट्स। पेस्टिसाइड्स are very harmful for both wanted organisms, earthworms, bees, etc., as well as unwanted organisms, mostly insects। Farmers all over the world are now practicing some natural methods to save their crops from pests। पहला पॉइंट देखिए इसका, बाय क्रॉप रोटेशन, बी पेस्ट आर यूजुअली स्पेसिफिक टू वन टाइप ऑफ क्रॉप इफ सेम टाइप ऑफ क्रॉप इज नॉट ग्रोन कंटिन्यूसली बट ग्रोन अल्टरनेटिवली with other types of crops, then the life cycle of pests gets interrupted by this change
Thus, the pests thriving on a particular type of crop die out. Okay, दूसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, बाय इंट्रोड्यूसिंग नेचुरल पेटर्स। अगर देखिए birds that eat various types of insects are encouraged to live over the field by placing nest and water bow around the fields. ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स हमने पहले कहा था आपको शॉर्ट्स, अब कराना है आपको लॉन्ग्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे ध्यान क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रोलॉन्ग्ड यूज्ड ऑफ पेस्टिसाइड्स इन अनडिस्क्रिबेबल, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। आंसर देखिए इसका, पेस्टिसाइड्स में अफेक्ट वाइल्ड लाइफ, दे आर स्प्रेड इन। आगे देखिए स्टूडेंट्स, continuous usage of pesticide can lead to ability of resistance among pests exists. Usage of pesticides increase the acidic content of soil. Also, they can cause soil and water pollution. They may also enter food chains from one level to another and may cause infections of skin and respiratory system. ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक्सप्लेन द नाइट्रोजन साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। स्टूडेंट्स आपको नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम बनाना है और एक्सप्लेन करना है। अब देखिए इसका आंसर देखिए, द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज fixed so that it can be used by plants and animals and their returns and the atmosphere is called nitrogen cycle. पहला पॉइंट देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन, it is the process of fixing atmospheric nitrogen into usable inorganic compound. दूसरा पॉइंट देखिए, नाइट्रोजन assimilation, the process of converting inorganic nitrogen into usable organic compounds in living organism is called nitrogen assimilation. तीसरा पॉइंट देखिए, ammonification, organic nitrogen gets converted into ammonia when plants and animals die and decompose. चौथा पॉइंट देखिए, nitrification, ammonia produced during the। आगे देखिए स्टूडेंट्स, during the decomposition of dead organism is converted into nitrates in the soil with help of nitrifying bacteria present in the soil. लास्ट पॉइंट देखिए इसका, denitrification, certain bacteria called identify bacteria act on decaying plants and animals and nitrates in the soil and release nitrogen gas into atmosphere. ओके स्टूडेंट्स, ये करवा देना क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ी प्रॉब्लम है, हम बाद में कराएंगे आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। आंसर देखिए पहला, हार्वेस्टिंग, क्रॉप्स आर कट एंड गैथर्ड, दे आर मैच्योर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, आगे ध्यान दीजिए। हार्वेस्टिंग द क्रॉप इज हार्वेस्टेड आइदर मैनुअली यूजिंग अ रिकेबल or by a machine called a harvester. देखिए पॉइंट थ्रेशिंग, the crop grains need to be separated from the crop stalk. The grain is covered by a husk which is loosened by a process called threshing. अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, विनोइंग, it involves the separation of the light chaff from the heavier grain. अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स, what is seed fallow?
फील्ड फेलो क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्रैक्टिस? आंसर देखिए स्टूडेंट्स, फील्ड फेलो, इन द मेथड फार्मर लीव्स द लैंड without farming for a few reasons. Nutrients get replenished in the soil by natural processes such as decomposition of dead animals and plants microbes. Okay students, हमने कहा था आपको 10 क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स हमने कहा था आपको शॉर्ट्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसको आप अच्छी तरह करना, वीडियो अच्छी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे ऐसे मिलेंगे हर रोज़। ओके स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल बने रहें। टेक केयर स्टूडेंट्स।